system for supporting teacher development for H3 education. I was going to talk about that today. Or I don't know if everyone speaks English. मैं mix कर सकती हूँ हिंदी और अंग्रेजी. यदि आपका चाहना है तो पूरा हिंदी जैसे आप बताएंगे. मुझे लगता है पूरा हिंदी करें, इंग्लिश कहीं-कहीं मिक्स हो तो बढ़िया है. I mean, that should be minimal. हिंदी कोशिश करूँगी. Mainly हिंदी. हाँ. Mainly हिंदी, okay. और है हमारे साथ. तो मैं बता. हाँ. तो वो बहुत अच्छा से सहयोग करेंगे. So I have started recording. We have started recording also. There are many others, those who are interested. So they watch this, later on as well. Okay. Yeah. Please go ahead. Yeah. Okay, एक minute. What? Recording is on. Yeah, and then we can share the screen after. So once again, sabhi ko namaste. Mera naam Niomi hai, and I have beside me my husband, which you've met over the past many days. You all know him. His name is Mahendra, in case someone has not seen him before, just jumps in late. But anyway, I'm very glad to... Oh, Hindi. Okay. तो आज मैं बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ हूँ, सभी लोग के साथ हैं. और मुझे लगता है कि अभी तक आप लोग का मतलब कोशिश या प्रयास बहुत बढ़िया है. मैं मालूम है कि आप लोग कुछ धीरे-धीरे एक सेंटर बना रहे हैं. तो पहले आपको लगता है कि पहले हम ठीक से समझेंगे बहुत सारे लोग के साथ, उसके बाद हम और योग्य अच्छा से बन सकते हैं. So I think that's very good that you're meeting with many people and trying to expand your skills and ability. So I think it's बहुत अच्छा प्रक्रिया process. So सबको मालूम है कि मेरा हिंदी इतना perfect नहीं है. I hope that मेरा hope है कि आप सब लोग मेरे हिंदी ठीक से समझ सकते हैं. Okay, so पहले मैं बताऊंगी कुछ एक दो a few lines about हमारे my experience. एक सेकंड अजय भैया, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं प्राय, तो फ्लो अच्छा रहेगा इंग्लिश में वो बोलेगी तो. बिल्कुल आई एम फाइन, है ना? नहीं केवल आपके फाइन नहीं, आपको तो गाइड हैं आप हमारे. नहीं मेरा मतलब और लोगों का मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों को ग्रुप में, बट आई थिंक मोस्ट सही बात है. सही है. तो वो है ना नियोमी, हाँ, किसी को दिक्कत है क्या कोई? भैया बाइलिंगुअल हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जैसे लोग में बाद में भी सुनेंगे, तो बाइलिंगुअल हो तो ज्यादा बढ़िया है. मिक्स कर दो. हाँ, मैं थोड़ा मिक्स करूंगी. कुछ चीज की मुझे नहीं मालूम है कैसे बताना हिंदी में. इस समय मैं अंग्रेजी बता सकती हूँ. ठीक है. तो हिंदी में भी बहुत अच्छा है, अच्छा पहुंच रहा है. ओके, बढ़िया. दीदी आप जिसमें कंफर्टेबल हो, अच्छा है. ओके, so I'll just share, क्योंकि आज मैं थोड़ा टीचर के बारे में मैं रखूंगी. तो I will just share a little bit about myself, हमारे experiences teaching के साथ. तो actually बचपन से मैं हमेशा बच्चों के साथ रहती थी. और मेरे even from the time I was maybe 12, 12, 13 साल, I started to get a lot of experience बच्चों के साथ, working at camps with children and working in my high school when I was studying. वहाँ पे नीचे एक छोटा सा children's program थे. So at that time I started even when I was 15. हर दिन मैं वहाँ जाती थी जब मैं स्कूल खत्म हो गया था. I was in class 10. इस समय मैं नीचे गई थे और एक छोटा बच्चों का प्रोग्राम था. तो इस समय काफी समय हर दिन बच्चों के साथ रहती थी. उसके बाद कुछ आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स था. उसके बाद मैंने after high school के बाद I went and I went into the teacher development I got my Bachelor of Education degree. My passion हमेशा education था. और मेरा चाहना था, even when I was young, even maybe 16, मेरा चाहना था कि कुछ education का बदलना बहुत जरूरी था और मैं इसमें भागीदारी मेरा चाहना था बहुत. So I wanted to seek out many alternatives in education. And I read lots about alternatives in education. And with that mindset,
I wanted to participate in a new model of education. With that mindset, I went to Teachers College. और मैं वहाँ पे 5 साल मैंने किया. And then after that, मैं India गई थी. और इस समय मेरा husband वहाँ मिले थे 2005. And at the same time, I was able to receive Madhyas Darshan and meet A. Nagaraj, and I was able to get all the answers I was looking for about shiksha क्या है, क्या प्रयोजन है, क्या method भी हो सकता है इसके लिए. तो पूरा चीज मैंने सोचा कि मेरा छाना था education को लेकर, जीनो को लेकर, पूरा चीज एक साथ मैंने मिला है. I was able to slowly receive it. तो मैं बहुत कृतज्ञ थी इसके लिए. And when I came back, after having a lot of experiences in India, I'll just share that I had my experiences in education. I've done a lot with more nature-based education, prakritik dang ka education मैंने किया. और एक साल मैंने थोड़ा indigenous population के साथ, native population के साथ बहुत in the north part of Canada, मैं एक साल वहाँ कुछ काम किए. और Waldorf philosophy, you maybe heard of Waldorf education में वहाँ पे, I was also a teacher there. उसके बाद काफी schools, कुछ traditional का classroom, थोड़ा traditional ढंग का classroom, और उसके बाद कुछ cooperative ढंग का education में वहाँ का कुछ practice था. और एक inquiry का school और curiosity based जिज्ञासा का पैदा होना. ये कुछ स्कूल है कि बच्चों का जिज्ञासा के साथ हम लोग टीचिंग करते हैं. तो वहाँ पे काफी साल हमने किया. So just to give you a little bit of some examples of some of the schools that I've taught at. शायद और है, but maybe I'm forgetting. So it's been my passion, and I'm very grateful to be here today and to be sharing about H3 education. And so, for several days, Shimanji वो sharing किए थे. आज हम लोग थोड़ा teacher के बारे में कुछ रखेंगे. I'm going to open up a screen here. क्योंकि मेरे पास था, I had some of these screens before, so I'm going to share it today. That maybe will help us. इसके पहले ये बहुत informal session है. Even though I have a screen, ये informal है. कुछ प्रश्न हैं, तो आप इसके बीच में आप रख सकते हैं. अभी एक मिनट, वो हम ये पहले पेज नहीं है, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. Okay. No, just one. हाँ, ये ठीक है. अभी तक नहीं होगा. Okay. Ajay bhai ji, आप देख रहे हैं? You can see the screen properly? Yes, it is very much visible. Okay. So before we start talking about teacher development, पहले we have to think about हमारे चित्र क्या है? Teacher का चित्र क्या है? How do we see a teacher today? आजकल, I would say, most of us, whether it be students or like children or teachers, if you think about a teacher, अगर हम सोचेंगे कुछ teacher के बारे में, often you think about एक chalkboard है, whiteboard, कुछ textbooks है, कुछ desks है. We have a certain image of what a classroom. Oh, एक minute, माफ करिए, मैं side में रखूंगी. What? Okay. We have a certain image of what a classroom looks like, what does a school look like, and also an image of what a teacher often looks like, or what does the teacher do. And I would say, हमारे पास कुछ पुराना चित्र है, and we have to rethink that. And that's part of this process of shape education, is to starting to rethink that image of a teacher. And what I would say, what we need to start seeing a teacher is seeing a teacher with their acharan. Because ultimately, the teacher doesn't teach only by what they speak. Kalin ka bhasha matapurne, bolna matapurne, but their whole acharan, values, character, and ethics. Mulya, charitra, niti charitra ke saath wo ji sakte hai ki nahi. ये पहुंचेंगे हमारे बच्चों तक. वहां पे
पहुंचेंगे. If we live with our achran, then it can reach the next generation. So that is the mukhi baat. If you see, human being itself is education. It's not just some information. Nowadays in the classroom, it seems like information is very dominating. Children spend a lot of time on Google, on YouTube, and searching for information. Information एक चीज है, दूसरा चीज है, मुख्य चीज है, हमारे teacher का आचरण है. And that is the real education for our children. So we need to reestablish that in our mind and understand what that looks like. I'm sorry, I'm speaking in English. But, and that's why we call this a life essential education, because it's education that's related to hamari zindagi se judte hain. If I see the teacher is living, they have their good behavior and they have good work, how they work and how they behave and how their thoughts are good, then ultimately I get inspiration and I also want to live that way. To ye ek prerna hai hamari zindagi mein, and that is very, very important. So we need to rethink that a little bit. And for that, we've also started to design a SHAPE education program because we need to, ultimately, we could say ourselves, because we've been schooled in a particular way, or hum log is samaj mein matlab paida hua, so we have a lot of imprint of that effect on us. So we also need to develop our own consciousness. We also need to develop our own consciousness. At the same time, we need to support the children with theirs. And we're in that transition phase right now. But I would say we don't need to wait. हमको मतलब इंतजार नहीं करना है जब तक हमारे consciousness पूरा evolve करना है. हमको शुरू कर सकते हैं. We have to start where we're at. And we need to provide एक system है, एक sequential system, ताकि teachers धीरे-धीरे इनका consciousness develop भी हो सकते हैं, धीरे-धीरे इनका study भी हो सकते हैं, इनका अभ्यास भी हो सकते हैं, कुछ mentorship भी हो सकते हैं, तो धीरे-धीरे वो प्रेरणा भी मिल सकते हैं, and they can have एक मतलब सकारात्मक वातावरण वो मिल सकते हैं, ताकि वो धीरे-धीरे इनका विकास भी हो सकते हैं और धीरे-धीरे वो हमारे बच्चों तक पहुंच सकते हैं. So today we're going to talk about a little bit of एक system, एक व्यवस्था और एक sequential, एक मतलब क्रमिक कुछ system है कि हम लोग धीरे-धीरे बना रहे हैं हमारे teachers के लिए. So अभी, how do I move? Okay, so right now we've been calling the program Shape Educators. And the program is for teachers or people who want to participate in education in their home, in their school. It's not only about in the school, but also in their families and beyond. और धीरे-धीरे इनका मतलब विश्वास, इनका confidence भी बढ़ सकते हैं, इनका समझदारी भी हो सकते हैं, इनका योग्यता भी हो सकते हैं, और and धीरे-धीरे they can become more of an impactful and an effective teacher, and they can also start to practice this in their living. And they can start to play a role in passing this education to the next generation and from school to school in the society. So this is what this program is for. And I'm going to share a little bit about what is this sequence, what are we thinking about it. So again, who is it for? It could be for anyone who is interested in making a sustainable, happy, and prosperous earth. Someone who sees the necessity for a more meaningful education based on Chetna Vikas Muli Shiksha hamare aage pidi ke liye. And anyone who sees ki mujhe teacher banna hai. Or when I say teacher, I'm talking acharan ke saath. If someone sees the necessity for that and they want to participate, to wo bhi bahut swagat hai is program ke liye. So we've started to formulate a course outline for a teacher development program. And हम थोड़ा start किए थे, लेकिन हम काफी व्यस्त था, तो हम पूरा मतलब consistency नहीं हो पाया. और ये एकदम जितना चीज की मैं sharing करूँगी आज, ये थोड़ा एक glimpse है, it's एक starting point है
अगर हम लोग बैठेंगे साथ में, हम थोड़ा और अच्छा से हम लोग और enrich भी कर सकते हैं. So when we're talking, I will share with you today, there's a whole sequence of teacher development sessions and programs and a whole system that we're trying to create. In the beginning, we've outlined an intro teacher development program. ये एक introduction है हमारे teachers के लिए. और ये introduction program, the whole process is एक theoretical component है और अभ्यास का component धीरे धीरे हो सकते हैं. और classes में कुछ examples, कुछ संवाद भी हो सकते हैं, demonstrations. And अभी तक हम लोग ने चुन किया कि 60 topics कि हम लोग explore करने हैं teachers के साथ. Okay? And this can be catered according to your setting. If it's you want to do एक बार हर सप्ताह, आपको हर दिन आपको करना है, तो according to the setup हम लोग चुन कर सकते हैं कि कितना समय लगेगा इसके लिए. And at the end of it, ये course 60 topics exploring करने जब ये completion होता है, उसके बाद एक 10 दिन का in person कुछ practical sessions हैं कि एक पूरा मतलब session H3 education का, और ये बहुत enlivening है these sessions, because they will be with there'll be 10 full days together, and we'll have maybe student examples, and we will try things out together and make it very lively, as if we're really exploring it with the children. Actually real children भी आ सकते हैं. And so that's the idea, moving beyond just the theoretical to एक practice, अभ्यास का. So आगे. So just to give you a sense, what does it look like? What are the topics? क्या topics हो सकते हैं? अभी हम थोड़ा sharing करेंगे. So ये पहले top वाला section, H3 education, the big picture. हम धीरे धीरे आगे पेज हम बताएंगे क्या है. ये actually मुख्य central चीज है कि H3 education क्या है, इस प्रयोजन क्या है, पूरा central दार्शनिक पक्ष है, पूरा central चीज है. इसी section में यहाँ पे आता है. And then according to that, इसी सब से कुछ और 4 और sections हैं. Understanding teacher, teaching and learning. तो ये पूरा अध्यापक वो कैसे teaching भी हो सकते हैं, बच्चों वो कैसे सीखते हैं, तो ये पूरा चीज यहाँ से आते हैं. उसका पूरा क्रमिक stages है बच्चों का development. Schools, हमारे schools कैसे बनाएंगे, और कुछ व्यवस्था का चीज यहाँ से आएंगे over here. उसके बाद skills and discipline specifics, कुछ specifics to just say math or reading or the arts, कुछ बहुत specific चीज है, all connected to इस प्रयोजन, H3 education का प्रयोजन है. Okay? So if you see, these are some of the headings that we have for the course. Under the big picture, ये मुख्य चीज है इस H3 education. तो पहले है education क्या है और क्यों है. So क्योंकि हम सब लोग मालूम है कि यहाँ का in general in the समाज में हमारे शिक्षा का प्रयोजन अभी पूरा मतलब स्पष्ट नहीं हो पाया, ये क्लियर नहीं है, इसलिए बार बार बदलते हैं और इकोनॉमिक सिस्टम से ड्रिवन भी होता है. तो ये पूरा मतलब मानव जाति का और पूरा धरती का अलाइनमेंट नहीं हो पाया कि हमारे मतलब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ये हमारे मानव का लक्ष्य, ये हमारे प्रयोजन है. इसी सबसे कुछ लक्ष्य है हमारे पास है. So we need to align it with that. Education, why and what. उसके बाद educational philosophy. इस पूरा मतलब जितना चीज की बाबा जी ने बताया, ये नागरिक ने बताया, education के बारे में है. All the philosophical पक्ष हैं about education. यहाँ से आएंगे. उसके बाद getting to know H3 education. ये पूरा हमारे approaches क्या है, life essential education क्या है, क्यों है, हमारे methodology, मतलब बहुत सारी चीज यहाँ से आ सकते हैं. पूरा just एक introduction to H3 education. Educational policy है. So ये हमारे नीति हैं. I'm Shiman ji. Baba ji has written, and there's a 127 points. So yeah, we will. You've talked about it with them, no? No. not this पाठ्यक्रम किया था, लेकिन शिक्षा नीति जो है उसको बाकायदा इसके अंदर समावेशित रहेगा. जब हम लोग 60 पॉइंट टीचर्स के लिए रखेंगे तो उसके अंदर पॉलिसी को बाकायदा अध्ययन करेंगे कि क्या है पॉलिसी.
उसके बाद टैक्सोनॉमी, श्रीमान जी तो आपको दिखाई थे टेक्सोनॉमी ना? हमने दिखाया था कि किस तरह से हम लोगों ने टेक्सोनॉमी को जो हमने H1 H2 के साथ पूरा जो एज क्रम है ना उसमें age श्रवण, के साथ, हाँ श्रवण age के मनन साथ। साक्षात्कार अनुभव और ऊपर जो अनुसरण अनुकरण अनुशासन स्वानुशासन प्रमाणीकरण इस वाले फ्रेमवर्क में जो दिया था वो पूरा रहेगा उसमें। उसके बाद चेतना विकास मूल्य शिक्षा और इसका मतलब आवश्यकता क्या है, तो एक हाँ। सेक्शन इसके बारे में है। हाँ, तो उसमें मूलतः इसमें पूरी बात है कि इस चेतना के विकास की आवश्यकता क्यों है और उसके बगैर शिक्षा जो भी हम देंगे अधूरी बात है। तो प्राइमरली इस पूरे उसमें बात है चेतना के विकास को लेकर और उसकी पूरी नेसेसिटी है ना हम मानव जाति को क्यों है इस वाले है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग H3 एजुकेशन कंटेंट, हमारा पूरा कंटेंट क्या है, दिस इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द पाठ्यक्रम हाँ, तो जो बाबा जी का पाठ्यक्रम हमने दिखाया था आपको जिसमें 3 भाग था, एक मिडल में शिक्षा नीति थी और उसके बगल में शिक्षा वस्तु फिर शिक्षा पाठ लेफ्ट साइड में और वैसे ही राइट साइड में शिक्षा वस्तु शिक्षा पाठ। तो वो जो पाठ्यक्रम है जिसमें 5 बॉक्स बने हुए हैं उसको पूरा बाकायदा इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद आगे स्वायत्त मानव बनना तो है। पूरे शिक्षा का जो लक्ष्य है कि हम कैसे एक स्वायत्त मानव बने। तो जो हमने 5 विभूतियां और कई बार 6 भी कहते हैं हम उसको, तो वो स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, ये वाला जो है अंत में व्यवसाय में स्वावलंबी, वो वाले बात को रखेंगे। ओके, सो क्योंकि ये हमारे लैंडिंग पॉइंट है, यू नो, या स्वायत्त मानव, ये हमारे अल्टीमेट लैंडिंग ग्राउंड हमारे बच्चों के लिए। हाँ, तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है, इफ यू वांट टू सी द बिग पिक्चर ऑफ एजुकेशन, हम लोग कहाँ लैंड करना है। हाँ, तो ये भी बहुत और जरूरी है। इसमें जो लोग नए हों उनको बता देता हूँ कि बेसिकली स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा एवं व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिकता, व्यवसाय में स्वावलंबन, ये 5 उस विभूतियां हैं, इस 5 मुद्दे हैं जिसको हम एट द एंड किसी ने शिक्षा पा लिया तो स्वायत्त मानव बनेगा। स्वायत्त मानव के लिए क्या चाहिए, वो 5 चीजें होने से स्वायत्त मानव बनता है। तो ये हमारा पूरा एजुकेशन का बिग पिक्चर हो गया। इतना हम अगर करते हैं, कुछ और है क्या इसमें? बिग पिक्चर पे नहीं, हाँ, ये तो अगर हम इतना रखते हैं तो अभी के लिए, हाँ, तो एक ओवरऑल आइडिया जो लोग H3 एजुकेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं उनको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि ये शिक्षा क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में एक आइडिया आ जाएगा। So if we're doing teacher development sessions, so there'll be maybe one session about each topic. कभी-कभी 2 सेशंस भी हो सकते हैं एक टॉपिक के लिए। बट इन जनरल एक जो जितने बुलेट्स हैं उसमें एक टॉपिक है और उस पे एक पूरा सेशन। But what I want to say, what I'm sharing to you now, these sessions, this is all for what we've designed as a introduction. This pura, all these points that I'm going to be giving to you is what we've designed for an introductory session on H3 education. And there's 60 topics. If you want to get an introduction of the ins and outs of actually H3 education kya hai, to ye 60 topics bhi hona chahiye. So these are the first base ones that we need to have. Ek foundational cheez hai is education ka. बिल्कुल, है ना? उसके बाद आगे section है understanding teacher, अध्यापक or teaching or learning. Okay, so ये भी there's कुछ topics है इसका. यहाँ पे कुछ topics है being and becoming a teacher. If you want to add anything up, you know, traits of an effective and impactful teacher. So we have to learn, what does it mean to be an effective teacher? What are some of the skills we're going to require? What abilities do we need to have? तो ये भी sharing करेंगे. उसके बाद H3 pedagogy, मतलब practices, methods and approaches. तो हमारे methods है जैसे हमारे how do we say in Hindi, हमारे system based व्यवस्था मूलक संबंध केंद्रित learning. So we'll talk about that later. So that's a very specific method कि हम लोग उपयोग करेंगे. उसके बाद हमारे approach, life essential, theme based education. कुछ approaches हैं और कुछ और methods जैसे project, we're going to be doing कुछ projects हैं, life essential questions, life essential projects, life essential lessons. तो ये भी पूरी चीजें यहाँ से आएंगे. Okay? उसके बाद life essential themes and life essential questions, a guide. हम themes विस्तार में, you know, in very detailed way हम sharing करेंगे पूरा theme क्या अंदर हो सकते हैं और लाइफ एसेंशियल क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हर स्टेजेस बच्चों का
we have to match it with life essential questions कि वो receive कर सकते हैं. जैसे kindergarten के age का बच्चों और class 6 का बच्चों, वो दूसरा open-ended life essential questions भी होना चाहिए इसके लिए, ताकि वो receive वो कर सकते हैं. उसके बाद our unique system based relation centered learning. तो ये पूरा विस्तार में ये system based relation centered learning हम कैसे करेंगे, कुछ examples बच्चों का work हैं, how does it work. उसके बाद planning for H3 education. अगर आप teacher है तो हम कैसे पूरा चीज हम बनाएंगे हमारे बच्चों के लिए. तो ये पूरा planning cyclical planning process कैसे हो सकता है. तो ये बहुत सारी चीज इसके अंदर. उसके बाद evaluation भी यहाँ पे होना चाहिए. I wonder if I don't have evaluation written here, but लेकिन ये बहुत जरूरी है, शायद missing यहाँ पे. But यहाँ पे evaluation be also included. But if it's not here, it's missing. बहुत बड़ा missing point है. उसके बाद family involvement in education. हम सब लोग मालूम है कि खाली education खाली हमारे स्कूल के अंदर नहीं है. Teacher एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है. हमारे परिवार भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है. तो हम क्या प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं ताकि हमारे पूरा परिवार भी शामिल भी हो सकते हैं. तो वो लगता है कि हम लोग इन्वॉल्व करना है और धीरे धीरे हमारे बच्चों का एजुकेशन ज्यादा पूरा enriched भी हो सकता है. उसके बाद हमारे 3 पिलर है बीइंग, फीलिंग एंड डूइंग. ये भी कुछ सेशंस है इसके बारे में. उसके बाद हमारे इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग. अभी आजकल ये बहुत सारी शिफ्टिंग भी हो रहा है हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में. I know some places still stick with it. ये हमारा math class है, ये हमारा science class, social studies class, सब कुछ अलग है और बिना प्रयोजन है. अगर प्रयोजन के साथ हम जोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इतना सारी चीज जोड़ सकते हैं. Actually, math भी जोड़ सकते हैं, poetry भी जोड़ सकते हैं, एक theme के साथ है. So we're learning about what is the, हम कैसे कर सकते हैं. What is the role of discipline? I'm losing the thing, the scroller. Yes. How do we, and then उसके बाद integrating curriculum. हम कैसे करेंगे? This is more the planning. If I want to plan and I want to see the connection between math and I want to see the connection between हमारे जैसे कुछ हम लोग we're learning about पदार्थ व्यवस्था. तो हम कैसे math भी जोड़ सकते हैं इसके साथ है. So ये integration है. उसके बाद आगे observation, planning and practice. तो ये टीचर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है. ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए, बच्चों का ऑब्जर्व करना है. हमारे बच्चों अभी तक यहाँ है और हमारे अचानक ही धीरे धीरे हमारे बच्चों इस यहाँ पे पहुंचना चाहिए. We want to support them to reach the आगे step में. So we have to observe the children, document, planning and practice. Okay, so उसके बाद designing engaging learning experiences. थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ हम कैसे हमारे बच्चों तक पहुंच सकते हैं, कुछ एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ. कोलैबोरेटिव टीचिंग कि खाली इस मेथड में टीचर्स भी कोलैबोरेशन भी होना चाहिए. एक ही क्लासरूम भी हो सकते हैं, क्लासरूम की बाहर भी हो सकते हैं कि साथ में प्लानिंग हमारे बच्चों के लिए. तो एक कोलैबोरेटिव मॉडल हम कैसे बना सकते हैं. उसके बाद एजुकेशन एंड निर्णय, हम कैसे निर्णय बना सकते हैं. So ये भी बहुत महत्वपूर्ण है. हमारे क्लासरूम के अंदर हम कैसे निर्णय बना सकते हैं और बच्चों भी शामिल इसके साथ भी हो सकते हैं. और also इनका पूरा मतलब स्कूल मॉडल है, एक मॉडल है कि पेरेंट्स भी जुड़ सकते हैं इस डिसीजन मेकिंग के साथ, टीचर्स भी, बच्चों का वॉइस है. तो ये भी. उसके बाद टीचर डेवलपमेंट टीम्स और सर्कल्स कि ऐसा नहीं है कि खाली टीचर डेवलपमेंट वो मतलब एक बार होता है उसके बाद हो गया. ये एक ऑनगोइंग चीज है. तो मतलब हर सप्ताह, हर 2 सप्ताह है टीचर्स साथ में बैठेंगे और उसके बाद वो शेयरिंग, रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए. और धीरे धीरे इनका टीचर का विकास भी धीरे धीरे ऑनगोइंग डेवलपमेंट भी हो सकता है. Here ongoing reflection and progress. How can we become more reflective and progress more as teachers? And good teaching and effective learning. तो ये कुछ topics भी है. And a few more. This is now about student learning. बच्चों कैसे सीखते हैं, कुछ learning styles हैं and how we learn. In general, I think most of us have spent time with बच्चों. हम लोग देखते हैं कि जैसे देवम बता जी, वो बहुत सारी चीज वो मतलब इनका शरीर के साथ वो कुछ building करना है, designing things or running, playing. ये बहुत मतलब dominating का. कुछ बच्चों जैसे आनंदी बेटे जी वो बैठेंगे, drawing करना है,
देवामती जी भी ड्राइंग करना अच्छा लगता है, वो कुछ चीज you can see कि कुछ learning styles भी अलग भी हो सकते हैं बच्चों का. So taking the same life essential theme, how can we make it available हर बच्चों के लिए through different styles of learning? So उसके बाद thinking and mindsets. अभी यहाँ पे इस एजुकेशन में हमारे चाहना है कि हर बच्चों वो इस सस्तित्व का मन सीखता है, togetherness का मन सीखता है, वहाँ वो how do I say, they will get it, वो मिल सकते हैं, they want, I want to say they get it, they get this mindset, स्थापित हो सकता है, वो इस mindset स्थापित हो सकता है. आजकल there's different in the society, there's also growth mindset, fixed mindset, तो ये भी we will learn about also the samajik, current samajik चीज है, और क्या अलग है इस H3 education, क्या अलग है, क्या mindset हमारा चाहना है हमारे बच्चों के लिए. उसके बाद empowering students in education. कभी बच्चों लगता है कि कल ही में बैठ रहे हमारे डेस्क में और वो नहीं मालूम है क्यों हम करते हैं, और वो नहीं लगता है कि मैं भी भागीदारी इसमें, I'm not participating in it so much. They feel like कल ही हमारे teacher कुछ you have to just they don't feel their engagement sometimes in it. So how can we make it where the children also feel बहुत inspired है, वो बहुत हर दिन वो स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है और वो लगता है कि I'm also a part of this education, you know. उसके बाद personalization and differentiation. So essentially maybe children learn at different stages and in different ways. How can we design the program so we reach all the children and it becomes meaningful to them? Uske baad learning through pura kala, arts, puppetry, dance, all the forms of arts, hum kaise jod sakte hain is Chaitanya Vikas Muli Shiksha ke saath, how we can involve it in a meaningful way. Uske baad student engagement, project-based learning, how to. So how we can engage children in projects that are all connected to hamare Ekis life essential themes, which are rooted in hamare Chaitanya Vikas Muli Shiksha. So ye bhi. उसके बाद एक दूसरा section, stages of development. हमारे क्रम है, बच्चों का क्रम है on their age and stages that they develop. Okay, so we've got from preschool to early learning focus. So हमारे छोटे बच्चों एक focus है, just zooming in on छोटे बच्चों का. What does it look like for them in their learning, and what do we need to keep in mind as a teacher? उसके बाद human development as a whole, all the way from घर, जब बच्चों हमारे घर में, all the way, घर में, all the way through the entire stage of पूरी जिंदगी. What are the things we need to keep in mind? Okay, उसके बाद child psychology, and we will also have a shape parenting program to support परिवार, क्योंकि हमारे इस education में we're starting kindergarten around age 5, age 5, बच्चों स्कूल के लिए जाएंगे. इसके पहले कुछ parenting program भी होना चाहिए. So we will talk about some of our programs to support the families. Okay. उसके बाद schools and system. So this is more vivasta wala paksha, school wala thoda bigger picture wala paksha. School is a learning ecosystem. Right now, we've designed schools as very closed models. You go in your classroom, this is with my students, my children, my age, in my classroom, all in different spaces. But how can we make it as an ecosystem where children of different ages are also working together, parents are also involved, people from outside of the school can be brought in to support the learning. So एक ecosystem के बाद एक diverse system है कि सब लोग मतलब उपयोगिता उपयोगिता, everyone can feel that, the usefulness and complementariness in the system. So we are going to talk about that. उसके बाद school design. हमारे school design क्या हो सकता है? If we want to have an ecosystem, it should appear like an ecosystem. So how can we design a school that could be aligned with H3 education? So that's more structural design. Maybe it will look a little bit different. Harmonious systems in education. So any systems on a larger scale that we have in education, we're going to talk about there. Ek manvya, I forgot the word for culture. Manvi Sanskriti. Sanskriti. I'm forgetting right now my Hindi words. Manvya Sanskriti और festivals है, उत्सव हम कैसे बना सकते हैं हमारे H3 education का schools में, ये क्या हो सकता है?
So एक बहुत सारे अच्छा ideas हमारे पास हैं, and we can design some amazing festivals that are aligned with हमारे पूरा H3 themes. और ये जो उत्सव है उसके साथ हम समाज को, परिवार को, समाज को बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं विद्यालय के साथ. Yeah, we can talk बहुत सारे बड़ी ideas that we could develop for that. लेकिन I mean दूसरे दिन हम बातचीत कर सकते हैं. उसके बाद H3 school implementation, जब एक स्कूल इनका चाहना है, जैसे एक स्कूल है इनका चाहना है कि हम लोग implement करना है हमारे स्कूल में, तो क्या क्रम भी हो सकते हैं, क्या कदम भी हो सकते हैं इसके लिए, तो ये पूरा चीज हम sharing करेंगे इस सेशन में. Integration of school, community and the natural environment. तो स्कूल एक standalone चीज नहीं है. स्कूल और हमारे मतलब पूरा नेबरहुड है, समाज में, और प्राकृतिक एनवायरनमेंट है, पूरा परिवार में, ये बहुत जुड़ना बहुत जरूरी है. क्योंकि education, to enrich the education of the child, all of those points need to be there. Okay? In the end, actually, school becomes एक central जगह है पूरा community के लिए. So we're going to talk about that, how all of them can come together. क्या programs भी हो सकते हैं इसके लिए. उसके बाद H3 home education, किसी लोग का चाहना है, कुछ परिस्थिति है कि वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, कुछ you know whatever situation, और इनका चाहना है कि वो home education करेंगे, वो कैसे कर सकते हैं, और कैसे वो संतुलित, you know, how they can make it in a संतुलित kind of way, and connecting with other home education families through through H3 education. उसके बाद एक संतुलित दिनचर्या है, कैसे बनाएंगे हमारे स्कूल में. सो ये भी मतलब हमारे विचार, व्यवहार, कार्य, ये तीन प्रयास, no not the प्रयास, what do you call them again, the practices, what are we calling it? अभ्यास, thank you, I'm forgetting my Hindi. The तीन अभ्यास. उसके बाद accessibility to equal education for all. So ये equal education मतलब we want to make this education accessible, you know, for many people, or wherever we can. So how can we pass it from one school to the next and make it accessible? Ek, you know, system ki baat hai, how we can make this system and pass it on. Uske baad what is the role of home, school, community, system, or vatavarn? How can we, again, it's kind of overlapping this one, but how can we ये थोड़ा ओवरलैप भी हो सकते हैं, ये कुछ दोनों, this one and this one एक साथ में. उसके बाद H3 learning circles and family groups. This is I don't know if we have time today to talk about it, or if I should leave it. Yeah, you can say. ये थोड़ा system की बात है that we were thinking of in the afternoons. हमारे बच्चों वो खाली अपने क्लास के साथ नहीं रहेंगे, वो दूसरा बच्चों के साथ, छोटे बच्चों, बड़े बच्चों तक, वो एक साथ में कुछ सीखेंगे, कुछ project भी करेंगे, कुछ skills भी सीखेंगे, and you will stay with those same students for a long period of time, ताकि कुछ bonding भी हो सकते हैं, and all the ages and stages learn to be together. So we can call those H3 learning circles, and those circles will happen daily or weekly in the school setup. So and I can explain more in detail what it can look like, but that's one thing that will be very important in the system. और family groups हैं. We thought कि हम लोग ऐसा करते, एक system की बात है parents के साथ, कि जैसे एक school है, they have, we said 100 बच्चों हैं, and maybe there's 50 परिवार हैं. So what we can do is also we can connect. एक school, the school should be एक केंद्रीय जगह है, and it should be a networking जगह परिवार के साथ also. एक जगह की सब लोग की everyone can feel enriched. हमारे बच्चों भी enriched भी हो सकते हैं, teachers भी enriched भी हो सकते हैं, और हमारे पूरा परिवार और parents भी enriched with this education. So the family groups are, we can connect a few families, let's just say 10 families, and they form a family group. Another 10 families, a family group. And those family groups meet maybe ek baar har mahina. They maybe work on a project, collaborate on something together. कुछ activities भी कर सकते हैं, ताकि वो 10 families, they can know each other well. कुछ जरूरी काम है स्कूल के लिए, तो ये 10 परिवार एक साथ में कुछ जैसे कुछ उत्पादन का चीज जरूरी है स्कूल के लिए, and we need सहयोग, parent का सहयोग. So the parents from एक group वो इस काम भी कर सकते हैं, दूसरा group
they can also engage, wo bhi bhagidari hai. And then you get to know each other. And eventually we can mix the groups. But the idea is that school becomes an enriching jagah, parents ke liye, families ke liye, bachon ke liye. और साथ साथ 10 बच्चे का या 10 परिवार का ग्रुप बनाकर उसको जुलना मिलना, बॉन्डिंग भी होना है. और धीरे-धीरे हर परिवार धीरे-धीरे और समृद्ध भी हो सकती है इस process में. With production, they can engage their production activities, many things, exchanging. So there's a little bit of a program that we're trying to develop for that as well. That is part of the system of what an H3 education school can look like. Uske baad, this is the antim section. This is more बहुत zoom in है. कुछ specific skills हैं, discipline का specifics हैं. जैसे एक टॉपिक है लैंग्वेज लर्निंग. हमारे बच्चों बचपन से शुरुआत में वो कैसे वो लैंग्वेज वो सीखते हैं, ये पूरा प्रक्रिया है. उसके बाद हाउ चिल्ड्रन लर्न लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. ये 4 भाग हैं. वो हर दिन सुबह में ये the listening, speaking, reading, writing will be connected with हमारे चेतना विकास मूल्य शिक्षा program, हमारे life essential themes. These will be naturally embedded in the life essential themes. And how do children learn? All of those, we will talk about that. उसके बाद being and playing together, हमारे बच्चों का खेल भी कैसे होना चाहिए पूरे stages में, छोटे बच्चों वो कैसे खेलते हैं, and what are ways that we can support children to play in a cooperative way. So we will talk about play. उसके बाद कुछ issues or challenges in teaching and learning. कभी-कभी होता है कि हमारे teachers कुछ challenges they face in the classroom. So how we can move beyond. We can take some challenges that teachers face and how we could move towards a solution है इसके लिए with this H3 education. उसके बाद पूरा कला है, expression है, and moving towards a humane culture. How do we use that in connection with the life essential themes? Meaningful, sartak kahani hai, ek new paradigm hai of kahani hai. What is the time? Kuch stages ki baat hai ki hamare chote bachon ka kahani kya ho sakte hain when they reach grade 6. Is samay wo thoda review bhi kuch cheez review bhi kar sakte hain, so there can be a different level of listening to a story. And going through all the different types of stories that we could share with the children and giving many examples of Sartak stories. Uske baad, what is the possibilities of writing? Many, many amazing projects we can do with writing and connecting it to our life essential themes. Kuch examples ki baat hai, or sharing many types of writing that we will show. Uske baad, technology, innovations, and digital media literacy. To ye bhi judenge. Aajkal, this is becoming very popular in our schools. How we can use these technology with a meaningful lens with the prayojan. So we will look at that. What technology should we use and what maybe we don't need to use because it doesn't match with the prayojan. Uske baad, meaningful production, life essential skills. To ye pura matlab hand-based cheez samriddhi se judte hain. When do we start them? We start from the beginning. Hamare chota bachcho tak, what can we start with? And all through the ages and stages, how those life essential skills will evolve. Dialogue, hamare samvad or meaningful discussions. It's an art, having dialogues and learning that art as a teacher and supporting our children in the classrooms to have those dialogues. Uske baad vastu kendrit math, vastu mulak Ganit, thank you. It sounded different when I said it, Ganit. So talking about that, what does that look like? How we connect that to the life essential themes. Okay. And STEAM, this is a very big thing in the society, science, technology, engineering, arts, and math. So how we can connect that directly through the life essential themes daily in our sessions with the students. Uske baad, well-being, swast, wellness, all of those topics. H3 education, global outreach through global cooperation, how we can connect from one school all the way to a larger collaboration. Uske baad, collaborative and inclusive learning, how we can create a model where every child feels very included and it creates a collaborative atmosphere and cooperation for hamare bachon ke liye. Ye bhi bahut mahtapurn hai. Uske baad, hamare 21st century learning hai. So how we can connect that with H3 education? मैं मालूम है कि शिमांजी वो कुछ sharing किए थे, कुछ 21 skills. हमने 21 जो competencies और skills वाला दिखा रहा था मैं,
तो उसमें जो भी 12 महत्वपूर्ण 21st सेंचुरी लर्निंग है वो उसके साथ इंटीग्रेटेड है बेसिकली। उसमें बहुत सारे हैं, अगर 30-35 होगा हम लोग जो प्रपोज कर रहे हैं, सो दैट वाज इंक्लूडेड एक्चुअली इन दैट। उसके बाद the last one is putting it all together in practice. ये मतलब final session है कि इतना सारी चीज how we can put it all together. और एक minute. And one point that I see somehow we did not write here specifically, इसके पहले मैं बताई थे, is evaluation, comprehensive evaluation, assessment, measurement. ये भी एक point है कि होना चाहिए, but earlier on. उसके बाद then there's the 10-day in-person practical course in 10 दिन का, and उसके बाद shape educator small group sharing circles. Where the teachers can meet from time to time online. Teachers in the same school can meet together weekly, and some groups can happen online for ongoing reflection, sharing hai. And now I'm going to put this together in a Torah kramik way of how we can emerge the system for teacher development. तो ये पहले step है, हमको लगता है कि हर टीचर, अगर एक टीचर है वो लगता है कि मुझे टीचर बनना है इस एज 3 एजुकेशन का सिस्टम के लिए, ओके? तो पहले स्टेप है कि आपको एक जीवन विद्या का मतलब परिचय शिविर आपको करना है, एक इंट्रोडक्शन करने के लिए। दूसरा स्टेप है धीरे धीरे आपका मतलब अध्ययन वाला शिविर का एंगेजमेंट भी होना चाहिए, एंड दैट कुड बी ऑनगोइंग। हमको लगता है कि इतना मतलब पूरा नहीं, इवन इफ पूरा नहीं हो पाया, बट आपका involvement भी हो रहा है इसके अंदर, okay? So if those two things are happening, then you can begin the Shape Teacher program, and that could be online. अभी हम लोग online शुरू किए थे, और ये मतलब शायद in person भी हो सकता है एक समय. For this Shape Teachers program, ये पूरे 60 points ये इसके लिए है. ये पूरे introductory program है, ताकि हमारे मतलब टीचर्स है वो एक नया विजन है, चित्रण है, एक नया विजन है, एक नया मतलब कल्पना है कि इस शिक्षा एक्चुअली क्या है, और धीरे धीरे कल इस नया इमेज कल्पना भी, that's one part. दूसरा part है कि मैं कैसे और योग्य बन सकते हैं, how can I develop my ability and my skills इसके लिए. So this first Shape Teachers program, this one is for just having a new vision of this education. Actually, ये क्या है, ins and outs. उसके बाद एक yearly 7 to 10 day H3 teacher education workshop. हर साल, शायद 2 बार हर साल, और एक जगह ये 2 जगह भी हो सकते हैं. और this one is इसमें मतलब आइडिया है कि हम लोग साल भर में 2 बार 7 से 10 दिन का जो भी तय करेंगे, मोस्ट लाइकली हम लोग 10 दिन का बनाएंगे, तो और अगर कम से कम 7 दिन चाहिए तो इसको हर साल 2 बार रखेंगे, और उसको 2 शहर में भी कर सकते हैं. तो ईयरली ये रहेगा, और उसमें टीचर लोग यदि आते रहेंगे तो उसमें धीरे धीरे नए लोगों को भी कुछ मिलता जाएगा, और जो पुराने लोग रहेंगे उनका भी इम्प्रूवमेंट कैसे हो. सो वी विल डू अंटिल they become fully equipped with the skill set and knowledge. And we can have ones eventually, like introductory, while for people who are new, they just completed the Shape Teachers program, and we can have eventually more advanced ones. Yeah, and that's where teachers are coming. They're sharing their the things that they've done with their students, and we're practicing together, and it gives them more, examples and ways to take this back to their school. More uplifted. Yeah. उसके बाद एक teacher mentorship program होना चाहिए. So imagine you're a new teacher. हम लोग एक नया teacher इसके लिए. I've taken the Shape Teachers program. I've taken the 7 से 10 दिन teacher education workshop. उसके बाद एक teacher mentorship program होना चाहिए, क्योंकि हर teacher they need to have someone to look up to. कि अभी हमारी स्थिति अभी यहाँ पे. This is where my स्थिति is. And what is the next step? Where do I need to strive for? इसलिए हमारे पास एक mentor है, तो हम थोड़ा प्रेरणा भी मिल सकते हैं. So we will have, every teacher can be connected with a mentor. और ये जो mentor हैं, वो जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं शिविर, मान लो 10 दिन का या 60 जो प्रोग्राम बताया, जब ये mentor होंगे तो बाद में ये mentor ही उसको आगे कर सकते हैं. What is this? Oh, I don't know. Can you hear?
आप लोग सुन Yes, सकते हैं yes, it is busy. हाँ। Yes, we can. हाँ, तो उसमें क्या दिखा कि जो मेंटरशिप है ना, तो फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ से मान लो कम हो गए और बहुत सारे लोग करने लगे। तो आइडिया ये है कि केवल हम ही अब 7-10 दिन का नहीं कर रहे हैं, वो सारे मेंटर भी इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो फिर उनको टीचिंग से निकाल करके टीचर्स ट्रेनिंग का कार्यक्रम वो सारे मेंटर करने लगेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में इसको फिर फैला सकते हैं। And how it will look eventually, let's just say we have एक school कि एक H3 education का school है, अभी स्थापित हो रहा है, एक है। उसके बाद then if someone is new to teaching, then they can go to that school and they can, you know, be assigned with a mentor, one of the teachers there, and they can spend time with them, observe and see how they're practicing and learn. उसके बाद आगे स्टेप है कि वो एक प्रैक्टिकम है, एक प्रैक्टिस का ऑप्शन की प्रैक्टिस की बात है, ताकि वो इस टीचर को अपने एक क्लासरूम का बच्चों के साथ वो हर चीज को प्रैक्टिस करना है, एक मेंटर के साथ है, so they will get that experience. और उसके बाद weekly teacher development circles में बताई थे कि हर सप्ताह, if you have this H3 education in your school, then हर सप्ताह teachers need to take a little bit of time, 1 घंटा, कुछ सेलिब्रेशन भी होने चाहिए, मतलब सेलिब्रेट की क्या अच्छा चीज हो रहा था हमारे क्लासरूम में, रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए, शेयरिंग, इवैल्यूएशन भी होना चाहिए, हमारे आगे स्टेप्स भी होने चाहिए, क्या होना चाहिए इसी प्रोसेस में, कुछ रेफरेंस के साथ है। So, और इसमें सारा विद्यालय मिलकर करेगा ये basically. पूरा teachers, all the ages and stages, and in those circles, sometimes you can spread out into small groups of teachers who are working with the younger children, a little bit older children, sometimes all together. और उसमें हम लोग भी जैसे जहाँ समय रहेगा इस वीकली मीटिंग में जब वो करेंगे, मान लो शुरुआत में जो स्कूल है, तो उसमें हम लोग यहाँ से रहते हुए भी ऑनलाइन जो उसमें हमारा पार्टिसिपेशन है, वी कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन अ सर्कल, लिसन व्हाट दे हैव देयर एक्सपीरियंसेस, क्या हुआ, क्या सीखे, हमारी तरफ से जो उसमें कंट्रीब्यूशन है वो हम कर सकते हैं। सो वील मेक इट वेरी कोलैबोरेटिव एफर्ट दिस वन। और ये हर वीक में एक टाइम सेट करके हर वीकली बेसिस पे इसको करते जाएंगे, ताकि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसमें और कैसे क्वालिटेटिव जो इम्प्रूवमेंट है कैसे हुए। Because as we were saying, हमारे teachers का चेतना विकास भी बहुत जरूरी है इस transition phase में, so we have to make sure that that's ongoing, we're paying attention there, and also to our own skills and abilities, we need to continuously develop them, and we need to give some, you know, very undivided time इसके लिए। उसके बाद you can see step 8, school and school system wide mentorship. ये पहले चीज है, mentorship was more between 2 teachers. उसके बाद, let's just say एक school, there's a whole system that is evolving, an H3 education school. So then we need to have proper systems in place. And for that, maybe that school might need some mentorship and giving some guidance about how to develop systems, how to connect the parents, what kind of programs we need. If there's a challenge, हम क्या कर सकते हैं आगे? What is the solution इसके लिए? तो एक more school system wide, and then once one school is evolving that system, एक नया school भी शुरू, let's just say एक नया school शुरू हुआ दूसरा जगह में, तो जितना चीज है कि इसी school में वो ने सीखा और they've developed, तो उसके बाद वो pass on कर सकते हैं दूसरा school के लिए। So it's more of a passing on from one school to the next. एक larger system की बात है। तो basically अगर आप मान लीजिए एक स्कूल स्थापित हो गया और दूसरा स्कूल बनाना है, तो फिर उसके लिए भी एक मेंटरशिप है, उसके नेक्स्ट स्टेप है, अंडर दैट मेंटरशिप गाइडेंस अदर पर्सन कैन डू। तो इस तरह से उसमें ही जैसे अपग्रेडेशन होता जा रहा है ना, इसी टीचर में पहले वो टीचर है, फिर एक जगह और हुआ तो वो उसको ट्रेन भी कर पा रहा है ना, मेंटरशिप में आ गया, फिर वो स्कूल वाइड मेंटरशिप में आ गया। सो एंड देन वी विल हैव अ कोलैबोरेशन बिटवीन स्कूल टू स्कूल, जैसे अपने among teachers they are meeting, among the schools also we will have time to time once in a month or something, कि जो भी 10 स्कूल आ गया तो उसका फिर एक सर्कल बना करके कैसे हम we will start learning from each other, जो भी यहाँ अच्छी चीजें हुई वहाँ अच्छी चीजें हुई, उसकी शेयरिंग कैसे हो, एक दूसरे को कैसे पास ऑन करें, तो ये सारा चीज भी वो उसके अंदर शामिल रहेगा। एंड दैट विल बी अगेन इन द गाइडेंस ऑफ ये जो मेंटरशिप रहेगा। और ये मेंटरशिप एक भी हो सकता है एंड a group of mentorship, they can be also working together, so that's kinds of things। सही बात है, because धीरे-धीरे this whole, although we have to start somewhere, हमको शुरू करना है somewhere, but over time things will become more bigger, more evolved and more larger scale, so we need to
build a system. We need to build the system, फिर- and it will become more enriched हाँ. over time. So we और need फिर to जैसे मान लो अगर किसी दूसरे देश में जाना है तो Hmm. who will take on, तो ये जो इस लेवल का मेंटरशिप होगा जिनके पास, they can go other countries and start helping them and building that. वो जो शिक्षा संस्कार समिति जैसा एक हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, तो they are a bigger responsibility, they have full vision, but they have हाँ. gone through. इसमें एक बात है कि एक जगह ऐसा होता है कि भाई मैं प्रोफेसर हो गया और पीएचडी कर लिया और बच्चों को कभी पढ़ाया ही नहीं। Or lots of times you have people who are working in business. They, you know, हाँ, they you become often make the big decisions for the schools, but they don't even know much about what it means to teach in Exactly, school. you become a chairman of a school, let's say, or whatever. Then they're making the big CEO of decisions. company, but जो नीचे लेवल पे काम ही नहीं किया। इसमें ऐसा नहीं, इसमें ना you are moving as you have experienced the whole process. उस प्रोसेस से एक्सपीरियंस होकर गुजर करके धीरे 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 हम ऊपर छनते जा रहे हैं ना। तो इस जगह जब हम आ रहे हैं तो काफी हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हर लेवल पे हम इसको एड्रेस भी कर पाएंगे किस तरह के चैलेंजेस होते हैं ना। और उसमें सभी टीचर तो ऐसे नहीं निकलेंगे, लेकिन हर एक विद्यालय में या 10 विद्यालय में मिला करके कुछ बहुत सारे अच्छे लोग निकल कर आएंगे। सो हाउ वी कैन अपग्रेड दैट प्रोसेस एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी कि उसको हम आगे कैसे लार्ज स्केल पे ले जाना, तो हाउ दे कैन टेक ऑन, है ना ये। Or the last step that we thought about for now is begin an H3 Bachelor of Education program. Abhi tak, all the other steps that we've been talking about, those are not connected with any government-based program where you get a certificate. But we are starting there. But ultimately, once we get the system evolved enough, then we could start our own Bachelor of Education program. We can connect with a current Bachelor of Education program that's already established. Yeah. And if they see the necessity, we can have this H3 Bachelor of Education program. Then we can reach out to many, many teachers, and it can be. और इसका मैंने हिंट भी दिया था कि जब हम अपना सेंटर बनता है गुजरात में, जो अपने लोग जमीन लेने की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक तो हो गया विद्यालय, और विद्यालय के साथ साथ एक यूथ प्रोग्राम। अगर यदि हमको हायर लेवल का एजुकेशन सोचना है तो बस एक बीएड प्रोग्राम उसमें हम ऐड कर दें। और बीएड प्रोग्राम दो तरीके से हो सकता है, बीएड एक रेगुलर जो 2 साल का होता है, या फिर बीएड ये जो कॉन्करेंट कोर्स होता है जिसमें हम बीएड मिला करके ऐसा भी हम कर सकते हैं। लिबरल स्टडीज को ले सकते हैं, या साइंस एंड आर्ट जो आजकल नया चल रहा है, साइंस एंड आर्ट टुगेदर, बीए बीएससी मिला करके जो उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ कोर्सेज ले करके, और बीएड को एक 2 साल का और एक हो गया 5 साल का, ऐसा कुछ कोर्स यदि फ्यूचर में बनता है। सो वी हैव स्पेसिफिक H3 बीएड प्रोग्राम। तो जो लोग स्टूडेंट हैं वो डायरेक्टली बीएड प्रोग्राम में आ गए, और उनका जो एजुकेशन हो रहा है, देयर इज ए स्कूल देयर, सो दे कैन हैव ऑल द एक्सपीरियंस। उसी स्कूल में जाकर के उनको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। दे आर लर्निंग हाउ टू बिकम अ गुड टीचर, हाउ टू टीच, ये जो हमें सारे पॉइंट बताए, एंड इट बिकम अ पार्ट ऑफ देयर बीएड प्रोग्राम। तो स्कूल और educate, and they can also themselves be engaged in the teen abhyas. बिल्कुल, teen abhyas भी जरूरी और है, वहीं पे विचार, अभ्यास भी हो और सकता है। कार्य वहाँ पे जितना because they want to move towards being also समृद्ध तो है। इस तरह से शिक्षा, और शिक्षा से फिर इसी से एक व्यवस्था का स्वरूप भी निकलता जा रहा है। So that's how we can build a pretty good system. तो ये हो गया आपका पूरा आपका जो हमने बताया टीचर्स के लिए जो सारे कार्यक्रम निकल कर आते हैं, ऐसा हम लोगों ने अभी सोचा। इस पे और भी काम करेंगे, बट दिस वाज द फर्स्ट, शुरुआत में ऐसा हम शुरू कर सकते हैं। इतना होने से एक बढ़िया हमारे पास हमको लगता है कि टीचर के पास एक काफी कॉम्पिटेंसी आ जाएगी, उसका विजन भी काफी ब्रॉड हो जाएगा, बहुत सारे स्किल्स भी आएगा, साथ साथ में वो इंटीग्रेट कर पाएंगे उसमें। जब जैसे जैसे लेंगे ना, तो उनके अंदर क्वालिटेटिव शिफ्ट भी आएगा, समझ के साथ उनके व्यवहार में, आचरण में भी दिखना चाहिए, ऐसा मानकर चल रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं सिस्टम, इसमें हमने कहा था कि कोई भी सिस्टम हम बना रहे हैं उसमें ना सीक्वेंस में होना और सिस्टमेटिक होना। अगर सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि लोग तो अलग अलग जगह पे खड़े हैं, तो कोई एक सीक्वेंस चाहिए जहां पे व्यक्ति खड़ा है उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, है ना। तो एक सीक्वेंस चाहिए और सिस्टमेटिक होना चाहिए। अगर हम पूरे सिस्टम के साथ सोचते हैं, देन डेफिनेटली सीक्वेंस और सिस्टम को हम लेकर चलते हैं तो सफल हो सकते हैं, हमको तो ऐसा लगता है।
बहुत ही बढ़िया नियोमी बहन। और आज टाइम हो गया, बट इफ देयर आर आई मीन फ्यू मिनट्स पीपल कैन रिफ्लेक्ट एंड वी कैन कंटिन्यू, है ना, क्वेश्चन आंसर विद नियोमी बहन टुमारो एज वेल। इसमें नियोमी बहन वी हैव केप्ट इट वेरी ओपन है, सो देयर इज नो टाइम प्रेशर, बट वी विल whatever queries people have, so we have enough time to address that. Okay. तो सुनील भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो खाली ये कह रहा था कि नियोमी जी ने जैसे अपनी क्यूरियोसिटी की जो इंटेंसिटी है इस नॉलेज को पाने के लिए, उसमें ये लैंग्वेज का बैरियर या कंट्री का बैरियर तोड़ा है, तो मेरे को भी जोश आ गया भी कि वैसा ही तीव्रता अगर मैं अपनी जिज्ञासा में रखूंगा इस ज्ञान के प्रति, तो ये मान्यताओं का जो बैरियर है, बंधन है, इसको तोड़ ही देंगे इस बार। तो इसलिए बिल्कुल करना ही है ये, और बीएड करना है मेरे को। तो मेरे को बैठ गया दिमाग में, पहला स्टूडेंट मैं हूँ, रजिस्ट्रेशन कर लो मेरा आप। बिना बीएड किए अच्छा टीचर नहीं बन सकते हैं। सुनील भैया टोल्ड लाइक लास्ट कि वो टीचर बनना है। आप बहुत अच्छा टीचर बना और हम बना भी सकते हैं आगे मेंटरशिप। हाँ, आप बहुत बढ़िया करेंगे। ओके, मजा आ गया। हाँ, और माफ करो, आज बहुत सारे हिंदी का शब्द that I know, लेकिन आज I was thinking प्रयास and then I forgot अभ्यास। मैं अभ्यास में it should be so simple, मैं बहुत सालों से मालूम है, but आजकल काफी दिन से again my sleeping is थोड़ा disturbed, then I feel like, especially when it's a second language, I'm not able to pick up the words कि नहीं, but then this flow is better, you know, नियोमी में जिसमें हम लोग जो बहुत relaxing way में, you know, which is natural, so your expression has been very good, I think. No, yeah, I know, but when I know myself, I feel like, how can I forget a word like abhyas? And I know that word so well, but anyway, today sometimes if also I'm not sleeping, so I feel like not as sharp, especially for a second language. So Abhi. True. किसी को और कोई रिमार्क या कुछ रखना है? हाँ, कमल भैया कुछ कहना चाहें, है ना, या कुछ कमल बहुत भैया? बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। Good. So then